starts with the remarkable name of Almighty Allah, who has created both this universe, and this universe who created a small piece of paradise in Pakistan. Well, before moving any further, I would like to introduce myself. My name is Munir Ahmed Brohi, and I am from Media Sciences class. And here we have our group members Sayyid Fahad Ali, Muhammad Ali Haider, Shuruq Munawwar, and Mr. Maaz. So before moving any further, you must be aware of our topic, which is, do recovering addicts deal with social injustice? So before moving any further, going into this topic, we are supposed to must know about the terminologies, the words which are specifically used in our this topic, which are the major words like addicts, social injustice. So if we talk about addicts or addiction, so a person who is particularly using a particular substance, that person is said to be the addictive of that particular thing. It can be, they can be drugs or other things. So simply a person who is used to, who is habitual, who is addictive to use a particular substance, that person is addict. And person who is addict of something, so we can say that that person is having the addiction of some particular things. They can be drugs, etc., or other bad habits. They also comes in the that particular thing of addiction. So now we talk about the social injustice. As we all know, the social means our society, the society in which we are living, we are facing the things, this is foundation of our, is called our society, social or society. So injustice, the particular things which are being practiced, the injustice, the unfavorable things which are not in the favor of our society, which are against our norms, these things are said to be injustices in our society. So there are few we can say the causes of injusticeness, like racism, heptonism, and etc. So these things deals with social injustice. So now we will come into our topic, which is, do the recovering addicts deal with social injustice? So now my other group members will pursue their topic, their part. Thank you. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग वेल। और आज की वीडियो हमारी एडिक्शन से रिलेटेड है कि हम एडिक्शंस में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल जो हमारा आने वाला मुस्तकबिल है, वो एडिक्शंस में क्यों इन्वॉल्व हो रही है, उसकी क्या वजूहत है। सबसे बड़ी वजूहत ये है कि जो हमारे पेरेंट्स वगैरह है और हमारी जो सोसाइटी है, वो उसको सही तरीके से टैकल नहीं कर पा रही है, उसको ईजीली ले रही है। तो जिसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर हमारी नौजवान नस्ल बेदारानी का शिकार है। और इससे हो क्या रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो अपने काम पर, अपनी स्टडी या जो भी उसके काम है, उस पर फोकस नहीं कर पा रहा। अच्छा, एडिक्शन होता क्या है, क्यों है, उसकी क्या वजूहत है। उसमें ये है कि जब इंसान जो है किसी काम में मिसाल के तौर पर फेल हो गया है, उसका दिल टूट गया है, या किसी भी तरह से वो नाकाम है अपनी लाइफ के अंदर, फेलियर्स आ रहे हैं, तो उसको कोई समझाने वाला नहीं है, नहीं बेटा यार ये फेलियर आ क्यों रहा है, तुम इससे सीखो। अगर तुम हार रहे हो तो अपनी हार से सीखो। इंसान जितना अपनी हार से सीखता है, अपने फेलियर से सीखता है, या अपने दुख से किस तरह सीखे हो, ये उसको बता। तो जब तक वो इन चीज़ों से सीखने लग जाएगा ना, तो क्या होगा कि वो अब आने वाले वक्त में कामयाब हो जाएगा। ये मसला है। तो लेकिन हमारा सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स या हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे, ना इसको समझा रहे। तो ये एडिक्शंस इसी वजह से होता है कि जब इंसान अकेला अपने आप को महसूस करता है। एक जो एक्सपेरिमेंट हुआ 20वीं सदी में, वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि 20वीं सदी में होता क्या है कि एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि एक चूहे को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसके साथ एक नशे वाला पानी और एक सादा पानी रख दिया। होता ये है कि जो चूहा होता है, वो उसके मुंह को लग जाता है नशे वाला पानी, और वो उस पानी की जो है वो उसकी लत में मुब्तला होता है, और वो उसको पी पी कर जो है वो मर जाता है। अब लोग समझने लग गए यार ये नशा, शायद नशे की आदी हो गई नशे का, इसने ये पानी पी लिया था तो इस वजह से ये मर गया, इसको इसकी जो है वो लत लग गई।
लेकिन दरअसल होता ये है कि वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट को एक दोबारा जो है वो अदा किया गया। जब दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया तो उसमें क्या करता है दूसरे साइंटिस्ट के एक केज को वो अच्छे तरीके से डेकोरेट करता है, उसमें छोटी छोटी टेनिस बॉल्स वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें खाने पीने की, और उसके साथ एक सादा पानी एक नशे का पानी रख देता है, और उसके साथ उसमें 5 चूहे और छोड़ देता है, यानी कि उसको एक कंपनी मिल जाती है चूहे को। तो होता क्या है, वो चूहे बाज का गलती से वो नशे वाला पानी भी पी लेते हैं, सादा पानी भी पीते हैं, लेकिन वो उसके आदी नहीं होते। फिर क्या होता है, वो चूहे ज़्यादातर सादा पानी पीने लगते हैं। तो यानी कि इससे पता चला कि जब इंसान के इर्द गिर्द उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, उसके लोग उसके दोस्त होते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो इंसान गलत कामों की तरफ नहीं जाता। जब इंसान अंदर से टूटता है या बिखरता है तो इंसान गलत कामों की तरफ लग जाता है। इसकी सबसे बड़ी, अगर हम इसको दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो जब भी इंसान टूटता बिखरता है, हमारे माशरे के अंदर ये है कि हम अपने अल्लाह से लौ लगाते हैं, सही, तो इस वजह से हम बच जाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में भी ये चीज़ें आम हो गई हैं, सब मुस्लिम माशरे के अंदर भी ये चीज़ें आम हो रही हैं। ये इसकी वजूहत यही है कि हमारे दीन से दूरी, हमारे अपने जो पेरेंट्स वगैरह हैं और अपने फ्रेंड सर्कल्स हैं, हम उसको ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे, उससे भी दूरी है। तो यही वजूहत है जो हमें एडिक्शंस की तरफ लेके जा रही है, और उससे अगर हमें छुटकारा पाना है, उससे रिलीफ हासिल करना है, उसकी वजूहत ये हैं कि हमें चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करें, हम किसी शख्स का दुख सुन लें, क्योंकि जब आप किसी से किसी की बात सुनते हैं, उसको शेयर करते हैं, सुन लें, अगर सॉल्व भी नहीं कर सकते सिर्फ सुन लें, अंडरस्टैंड कर लें, तो उससे उसका जो है अंदर स्ट्रेस, उसका डिप्रेशन वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप प्लीज़ अपने लोगों का ख्याल रखें जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनको सुनें, क्या है उनके मसले मसाइल, अगर हल कर सकते हैं तो ज़रूर हल कीजिए, अपने दोस्तों को अपने से करीब कीजिए। जो मीडिया और ये जो मोबाइल फ़ोन वगैरह आ गए हैं, इन चीज़ों ने हमें दूर कर दिया है, और दूरी से हम अकेले, फिर अकेले से हम नशे की तरफ, और सबसे मेन चीज़ कि हम अपने दीन से जुड़ जाएँ, तो हम तमाम बुराइयों से छुटकारा पाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। This is Fahad, and I'm making this vlog for my public speaking midterm task, which was assigned by our instructor to us. So, the topic for the vlog is there any social injustice for the recovering addicts in the society? So, first of all, I would like to just to take your attention to this issue, that just for a moment think about a drug addict. A drug addict is somebody who has been suffered through a mental distress, which eventually caused him to do drugs. So him or her, it doesn't matter, but the thing is that this this tiny little thing, that mental distress, caused this man, this woman, this issue that they got to addict with drugs. They start doing drugs, but when how the society reacts to it, this is how the process of dealing with this issue generates. Now, how the society, how our media portray this? Our media, basically our media, always portray drugs or associate drugs to some movie stars or their kids, or whatever you see in the news or in articles, like some drug dealers, or you will find drugs related to murderers or robbers. So this particular portray of things make it difficult for the recovering addicts to get into mainstream again. While they are recovering from it, they have to face the stigmatized words and stigmatized perception
of the society as well. They are all, although they are recovering from something that is pretty bad already, and now they have to suffer with this also, that the society is stigmatizing them like they are not a part of the society. So it is a difficult thing, and yes, it is also making an injustice in the society, because drugs can be of many kinds, you see. So while making it a stigma in the society, this makes us as a society responsible for social injustice in our society. So this must be addressed like a mental distress issue. So everyone who is recovering from it, or who wants to recover from it, who wants to get back to the mainstream of the society, should make an effort, and we as a society has a duty, has an obligation to do that. We should help them to get back to where they were. Thank you so much. Hello, this is Sharif Munawar here, and today I'm going to talk about how do recovering addicts face social injustice. So I'm going to begin this by saying all humans are born free with equal dignity and rights, and everyone is entitled to respect, fair treatment and dignity regardless any situation. Drug addiction is not considered as a serious disease by most of the people. Someone with the cancer has the public sympathy, but whereas someone with drug addiction is considered to be a loser or a disaster to our society. Or the drug addiction may begin as a pain medication after any injury or illness, including mental illness. The main cause of drug addiction is hopelessness, lack of strength of facing failure, depression, stress, anxiety, etc. So that's how recovering addicts face social injustice. Even they want to recover from this drug addiction, the society makes it harder for them to recover from this drug addiction by not treating them right. Somewhere people feel that person with a drug addiction is less of a person because of their addiction, and society does not feel like helping them. Society thinks it's not their responsibility to help them financially or emotionally or in any way. Due to the stigma associated with drug addiction, many drug addicts choose not to seek help because they are ashamed. They do not want to embarrass themselves or their families by admitting their problems. Also, drug addiction has a huge impact on their families. Drug addiction families can affect their families mentally, physically, financially, and in many ways. So this issue can be solved by only taking this as an issue and helping the drug addicts, and by